Navneet, are you there? Yes, sir. So I hope my voice is loud and clear. Yes, sir. 100%. And one important clarification, if you guys don't get my voice audio clearly, right, you will get the recording, so you don't need to worry at all, right? Navneet, you can repeat the same, right? Sure, sir. Navneet, you can check the comment section that everybody is getting my voice loud and clear. Just check the comment section, then I'll start. Everything is good, Navneet? Shall we start? Yes, sir. Okay, yeah. So thank you so much for coming in such a large number on a such. Navneet, hello, hello, Navneet, hello, Navneet, Anand. Guys, 2 minutes. Hold on. I think we are facing some issue with our spaces. Also, need to check out. Anand, I hope you can hear me. Yes, So I think there is some problem with Twitter. I think I don't know. yes, there is some issue. Yeah, yeah. Okay, no problem. So thank you so much, Uh, guys. Yeah, Navneet, I hope you can hear me. yes, sir. Okay, all right. Little flag sometimes, but I am listening. I can hear you properly. Anand, you can mute Yes, yourself for the time being, and Navneet, you can also do that. Yeah. Thanks, guys. So thank you so much, and to coming on such a short notice, and really, really, I wanna congratulate each and every one of you on Twitter, in entire investing and trading community for believing in India's story. Because when we did 4-5 spaces back to back around 15,500 levels, when things were really, really difficult and people were, you know, just telling us that this market is gonna go down a lot to 10,000, 12,000, 14,000, but we kept telling you this, just hold on, hold on, hold on. And God is really, really kind that after that you got almost what, 32 3,300 points rally on the Nifty. But the major rally came in a sector where we got one of the largest position, right, in Bank Nifty, where I kept telling you that buy three large private sector banks and PSU banks, where you must have observed 100% kind of a return in Can Bank, similar kind of a return in Bank of Baroda, and similar kind, maybe not similar, but another 40-45% kind of return in Punjab National Bank. So all those bets which we have spoken about it, they did really, really well for us, and the people who bought it, they must have enjoyed a very good profit in those stocks. So congratulations to everybody who kept faith in Indian stock market, and now they are richly rewarded. So congratulations to you and your family. And but now what is next, right? Because we have already up by 11,000 points on the Bank Nifty and 3,300 points on the Nifty. So what is next going forward? So right now as we speak, our Nifty P is somewhere around 21.8, right? 21.8.
So we have, our PE has gone up further, and mainly the PE has gone up further because of the addition of Adani Enterprises and all those, and market has also rallied a lot in last 4-5 months. But as of now, when I speak, if you remove Asian Paint and Adani Enterprises out of the Nifty composition, your Nifty PE will come around 20 and a half, right? So the Nifty PE reduction will be around 1.3, 1.4%. But this is also, again, I'm telling you, at 18,500, markets are not cheap. When I say not cheap, it doesn't mean that the market will fall tomorrow, right? When the markets are not cheap, you have to be very, very careful with the valuations which you are paying to buy the growth, to buy the capital appreciation. So you have to be very, very careful with your stock selection. You cannot buy XYZ shares because, and make money, because right now most of the stocks, the good ones, have recovered from their lows by 30 to 40%, and some of them are small caps and mid caps, mainly on the PSU basket side, are up by 100% even. So if you are buying after a 50-60% rally and paying extra premium or valuation to the company, chances are you have to go through time correction, and instantly maybe you have to lose 5, 7, 8% of your capital, and then later on you will be able to make money on that stock. So be very, very careful when you are buying at 18,500. Do the proper due diligence, go through the fundamental, technicals, and everything about the company, and then go and buy, right? So at 15,500, it was quite a easy task for you to buy and hold. So whatever the company you bought it, then maybe out of 10 stocks, 8 must be up by 30 to 40%. So it was easy. But right now at 18,500, you have to be very, very choosy, and you have to be very, very careful with what kind of valuation you are paying to buy the growth. And you can pay little higher valuation also if the company is growing more than India's nominal GDP. If the company is growing at the rate of 15-16% or 18%, you can pay 40p, 45p also. But if the company is growing at the rate of 10-11%, which is close to India's nominal GDP, or 12%, then don't pay more than 18-20p for that particular company. So be very careful of what you are paying, and try to buy at a lower band of valuations. So these are the few things you have to keep in mind. But let's say my view at 18,500 is, market may give you a dip next year, and that dip can be between 8 to 11% on the Nifty. But to be honest, if I look at all the factors, right, the banks will not fall big, because their earnings will come next quarter also. So this quarter also, so in December quarter, banks will report a phenomenal number. So what is the downside risk for the bank Nifty from here on? So right now the bank Nifty is trading at 43,000. So bank Nifty may go down in the worst case to 40,000 or 39,800. So it's a downside of 6-7%, 7% on the bank Nifty. And second thing is, IT will also now not go down big, right? So around 25th September, I have spoken about the bottoming out of IT sector. And after that, IT sector has rallied I think very, very good, right? So we have spoken and recommended Infosys and all those stocks, and they have rallied very, very hard. So right now, IT will also not fall big. And the reason is very, very simple, because in the recent Fed minutes, you must have observed Fed is saying they will go slow on rate hike. And that is sufficient to support the Nifty IT stocks, right? So if they don't fall big and bank Nifty don't fall big, then what is left to fall, right? So maybe ITC may fall by 5-7-8%, HUL may fall by 5-7-8%, and maybe your Asian Paint, but right now the crude is down, so Asian Paint will, and Asian Paint has done nothing as a stock from last 1 year, so that will also not fall big, right? Despite of expensive valuation, it may correct 5-7%, but the downside risk in Asian Paint is also very, very limited.
So why I am just working with 7 to 8% correction, not 15-20% correction? The reasons are very, very simple, because the earnings are coming, and when the earnings are there and the companies are reporting very decent numbers, market will become cheaper and cheaper going forward on forward PE basis. And if that is the case, then you will not get again Nifty at 15,000 or 15,500 or 16,000. In worst case, maybe so around 16,750 odd levels on 29th September. You can go and check my tweets. I have tweeted about this. I am buying right now after a 1200 points correction on the Nifty. I think that is the bottom as of now I see on the market. So your maximum downside risk from here on is around 10-11%. On a stock basis, it could be 15%. And why I'm not seeing a big correction? The reasons are very, very simple. Because the commodity, most of the commodities prices are at 3 to 5 years low, barring Brent crude. Most of the commodity prices are at absolutely low level, right? So the company's margin from here on will improve going forward. And if the company margins will improve, profitability will improve, earning per share will improve, then how come the stock prices will go down big time? So the commodity prices are going down. Brent crude is going down somewhere at managing around $85 per barrel, and dollar index is also going down because of the little Fed commentary. Dollar index is also broken below crucial moving averages, below EMA 2163. So if this is the case, I'm not saying I'm super bullish on the market, but if anybody is making a super bearish case on the market right now at 18,500, chances are again he will be, again chances are he may go wrong, right? So whatever the dips you are getting going forward next year of 8 to 10%, that will be a great buying opportunity for investors. And for traders, what you can do, let's say what I'm doing, I'm telling you. So normally, let's say I trade with 100 lots overall my future position, or 200 lots. So I'm doing right now 50 lots at 15,500 or 15,700. It was exactly opposite, right? So I was taking all sort of risk possible in the market, because I was absolutely sure that these are the bottom level valuation. Right now I'm not sure that these are the bottom, because we have already rallied a lot. So the risk is only one risk which market is right now not factoring, which is again the nuclear war, which is, I think, is not the case going forward. And the second thing which market is not pricing in right now is any major default in financial services industry globally. And why that may happen? One, the event, the probability of that event is only 1%, but still I want to put that risk on the table. So you should keep that risk in mind, because the 1% probability is also a good enough probability, because right now the interest cost of borrowing is going up rapidly globally, and world is not very much familiar to deal with this kind of a higher borrowing cost. So everybody is buying higher and borrowing higher and lending higher, or trying to manage their balance sheet somehow, to manage their debt, or doing debt restructuring. In this cycle, if one or two big large financial services company, let's say, they may get into trouble. If that is the case, then this correction could be 15 to 18%. So at worst case, I see 16,400, 16,200. So worst case 16,200, 16,400. You can say ideal case for portfolio investor, if you get somewhere around 17,000, 16,800, you should buy, and buy heavily. And even
This is quite possible, right? And chances are Nifty may not break 17,800, but that is a super bullish case. That if everything is going right, then chances are Nifty may not break 17,800 also. One, two negative surprises for the small negative surprises from Gujarat election, but I think BJP is well secured there. I don't see any challenge, but still, if that is the case, we will evaluate. And some themes for you guys. So one is railway. I have spoken about it. After that, the railway stocks have rallied maybe 30-40%, right, in the matter of 20 days. Second theme I am right now working with is infrastructure stocks, infrastructure as a whole. And recently we bought few companies, and I'm planning to buy more. One or two company I can name right now where the market cap is good and where my recommendation will not be able to inflate the stock prices by a lot. So one is Larsen, where we have some positions and we are inclined to add more. So Larsen, where we have serious interest, and couple of infrastructure names we'll try to name. We'll first check the market cap and all the criterias, and we if we have the clearance from our compliance team, then we will go ahead, right? And I'll share on Twitter, because right now SEBI don't stop us to give the recommendation to any cap, but deliberately I have kept this $2 billion market cap, because I don't want to, on my recommendation, I don't want to see the stock prices going up 15-20% after my recommendation, because some of you maybe end up buying those stocks at a higher prices, and some of you may lose money on those stocks. So Larsen, where whatever the quantity you want to buy, you can buy it at a 1-2 rupees difference, and that will not make any difference to anybody, right? So infrastructure is the second theme. Railway is doing already well, and I think it will continue to do well. Then third theme is fertilizers, where I'm quite bullish. Government is really working hard for this sector, and they are doing all sort of things to help the farmers and everything, and they are helping companies as well. So fertilizer is the third theme where you can focus. The problem with this theme is still you don't have bigger market cap companies in this space. But again, I'll share few names maybe by Monday from this theme as well. And so this is on the F part, fundamental part. On technical side, if you see right now, Nifty is above all the moving averages, right? So barring 10, EMA 10, 21, 63, EMA 200. So extreme short-term trend is up. Short-term trend is up. Your medium-term trend, that EMA 63, the line in sand, the institutional support, the Nifty is above that. EMA 200 clearly above that. So in all time frame, whether it is weekly, monthly, or daily charts, or 4-hour charts, or hourly chart, Nifty trend is clearly up, right? So there is no point shorting the market, anticipating that the market will fall. Market will only fall if Nifty breaks below 18,125. Make a note of this level. Market will only fall big, or even 500 points, only below 18,125. Below that, whatever the correction you get, that will be a running correction, and that should be used to deploy whatever even trading or investing opportunity if you are getting, provided and with a proper stop losses. So on the technical front, not much to talk about. On the derivative data, if you go by this, your right now Nifty PCR is somewhere around one, which is not hugely overbought. Same with the bank Nifty also. Your put call ratio on the bank Nifty, just a second. The put call ratio for the bank Nifty is around 0.8. So which is on, I'm talking about the weekly PCR range. So they are also fine. They are not indicating a very highly overbought June. So that next week should be good, right? For short-term traders. Stock specific, you may make huge amount of money next week. So focus on certain stocks, right? And
So fundamental done, technical done, derivative done. FIs are, of late they are buying in cash, selling in cash, but they are consistently from last few days they are trying to buy some stocks in stock future segments, and they are adding some long position in index future as well, right? So this is still a very nascent, 1 day data for this December series. So I cannot comment too much about it, but I think this NAV management game for December will be big. So maybe Nifty may hit 18,800, 900 for December, which the target which I gave you in July, if I'm not wrong, about 18,800 this year. So maybe 100 points more, 18,900. So I'm revising the Nifty target by 100 points only for December. In December, you may get 18,900, and then we will take it from there, right? And but I feel there is a serious NAV management may happen in IT stocks, because FIs are still holding big time Indian IT stocks, the large ones, and 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 if they take these stocks up by 10-12%, then they will be able to report a very good NAV for their funds. So maybe watch out IT sector for short covering rally and NAV management case, and we will highlight few more stocks for you guys in Telegram channel. So that's it, Navneet. I think so. By and large, 18,000. Let me summarize: 18,800, 900 for December series should be your target. If you are getting there, try to take some money off the table. And if you are getting Nifty around 18,200, let's say by because of any XYZ reasons, right? You should attempt a long only for the trading purpose with a stop loss of 18,125, which is just a 75 point stop loss, and your target will be another 300-400 points from there on. So that's it. Thank you so much, Navneet. किसी का कुछ क्वेरी रहेगा तो 2-4 क्वेरी ले लो, या कोई कुछ बोलना चाहेगा, कोई स्पीकर है, अपने कुछ फ्रेंड्स भी हैं, कोई फ्रेंड्स हैं जो स्पीकर रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो उनका ले सकते हैं. सर योर व्यू ऑन केमिकल सेक्टर, ट्रू हार्ट का सवाल है. केमिकल में देखो चाइना +1 का थोड़ा सा कुछ है, बट थोड़ा सा इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत खराब आ गए. मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में पॉजिटिव था, मेरे बाई करने के बाद स्टॉक आई थिंक 20% का रिटर्न भी दिया आप लोगों को, बहुत सारे लोगों का थैंक यू का मैसेज भी आया था, बट ठीक है. उसके बाद भी कुछ केमिकल में ज्यादा लिया नहीं है. सो मैं आपको अभी दीपक नाइट्राइट में थोड़ा ट्राई किया था, बट उसमें कुछ ट्रेड वर्कआउट हुआ नहीं. आई थिंक 60-70 रुपीज ऊपर निकल गए अपन. सो मैं अगर लूंगा तो मैं आपको बोल दूंगा, मैं अभी ले नहीं रहा हूँ, एक क्वार्टर और देखना चाहता हूं मैं. ओके सर, वरुण अग्रवाल जी का सवाल है, एनी आउटलुक ऑन सन फार्मा एंड अडानी पावर. Sun Pharma, I think Sun Pharma has rallied a lot. Adani Power I cannot comment, but Sun Pharma has rallied a lot. It will be tough for Sun Pharma to give you another 15% return from here on in next 1 year. I think it will be tough. सर एसजी स्टॉक स्टडीज का क्वेश्चन है बजाज ट्विंस के ऊपर. No. बजाज ट्विंस एट लो, मार्केट एट हाई. So be careful here. Be careful here. They will be not able to grow at the same speed, and stock prices are not, showing great hope here. So I think be careful here. You may see 6,200 in next down move on the Nifty on Bajaj Finance. Maybe in Jan Fab you can see 6,200 on Bajaj Finance. My view will be invalid if the Bajaj Finance managed to close above 7,200. ओके सर, सौरभ मलिक का क्वेश्चन है, आउटलुक ऑन रियल स्टेट. Real estate as a business, the prices has gone Real up. estate companies. We made some money in this Oberoi Reality, or maybe couple of them. Prestige, Suntech. Yeah, Suntech also, couple of them. I think we made some money in Prestige also, but I don't know. Yes, we lost some money in India Bulls Real Estate also. So
I don't know, yaar. I'm right now. I'm not very bullish because the interest rates are going up. I don't know. The company's ROCs are not improving from here on. So I don't know. Return on capital employed is not improving for this, and whatever you some of the part or NAV valuation matrix is not right now so compelling me to buy at current market prices. Because what will happen? Uh, the land prices has gone up by 40 to 50% across the country in major cities, right? And if you talk about Gurgaon, the land prices has gone up by 40 to 50%. So I don't know from where these, and even as we speak, the cement prices are going up, right? And because of that, we are bullish on cement sector as well. So I don't know from where these companies will be able to make huge amount of profits from any projects, but they will do well. They will be market performer. They will not create a substantial wealth for you from here on. Okay, sir. Sir, Dr. Rajesh Gupta is asking, can we still enter into PSU banks now or the rally is coming to an end? Sir, to be honest, I have shorted few PSU banks today, around 11 a.m. and I'm holding those shorts, and I'm buying some private sector banks where the rally has not happened, in some of the private sector banks where I have a bullish view. So I'm doing, I'm buying private sector banks and I'm shorting PSU banks at current market prices. So I'm biased. Uh, I'm biased also. I can go horribly wrong, but this view is only valid for 15 days. Chances are I may get 5 to 7% drop in PSU banks from current market prices. So, and that is very a very good return for me as a trader. Sir, Nikita ji is asking about gold prices, whether it will rally or sideways. So I'm not a great expert on gold, and but let me see the chart. Huh? Just a sec. Huh? Navneet, hold on. Huh? Okay, sir. Sure, sir. Gold. Right now, as we speak, gold is below EMA 200, right? And if I see, the gold has made a bottom for sure. As long as it is above, I'm talking about dollar terms, huh? So as long as it is above 1711, you can maintain your long position, and chances are you may see 1880, 1880, 1880 in dollar terms on gold. So if I am long in gold, my stop loss will be 1711, and my target will be 1880. Right now, the current market price is 1750. So it's a very good risk reward trade. Chances are the kind of price action I can see on 4 hour charts and hourly charts. It is just a retracement. Maybe you can see, I think, but it will be a slow move. It will be not like a rocket move, right? So you have to keep faith for 6 months and you will have that target of 1880. Okay, sir. And last question about PSE sector, public sector enterprises. No, so I just spoken about railway sector, right? So Yes, sir. railway, I'm really positive. Though this my after my comments, these stocks have rallied like 30 to 50%. Some of them RVNL, I think, rallied 50%, and some of them rallied IRFC rallied 30%, and some of them rallied 20 to 25%. So I think railway will do well. Some of the this energy companies, right? One of the biggest energy company from PSU sector. So whatever you like GAIL or ONGC, right?
nobody is looking towards them, right? So just focus on them. If your chart is telling you to buy, you buy them. Recently we have entered ONGC, right? Today only we bought. As a disclosure, I am telling you. So it may take 3-4 months to give you some money, but this is one of the safest bet at 18,500. So right now at 18,500, I want to just secure my portfolio. I don't want rocket kind of a return. I'm just playing to make even 2-3% in a month. That will be a very good return for me at 18,500. So I'm playing. I'm going slow. I'm buying some defensive names with a very good dividend yield like ONGC and all, right? So you can also study, and if you like them, you can buy them. So I think the risk is very limited. ओके सर। सर सुमित तिवारी जी का क्वेश्चन है, सर पीसीआर कैसे देखना चाहिए, लाइक ओपन इंटरेस्ट बेस्ड और क्वांटिटी बेस्ड और एट द मनी ओटीएम कंबाइंड? नहीं, सो देखो, एक सुमित कुछ बोलना चाह रहा है, उसको स्पीकर बना दो, वो पूछ ले। नहीं, उनका ये सवाल है, उन्होंने ये इसके लिए बार बार वो रेज हैंड कर रहे थे, उनका अभी तक रिक्वेस्ट नहीं आया है। देखो पूछ लो, वो पूछना चाहे कुछ और, शायद वो एक्सप्लेन करना चाहे, उसको दे दो माइक देना चाहो तो। यस सर, एक सेकंड। इसमें तो आ नहीं रहा है अभी। कोई नहीं, इनका चलो क्वेश्चन उनका यही था, ओपन इंटरेस्ट कैसे हाँ, देखना? नहीं, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, इंटेलिजेंट सवाल है, मैं इसको आंसर देता हूँ। देखो, कभी भी ये देखो ना, रेलेवेंट पीसीआर देखा करो। रेलेवेंट पीसीआर क्या होता है? जैसे मान लो अब 18,500 चल रहा है निफ्टी, राइट? सो आप अगर 19,000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखोगे, जहां पे विक्स 13 है, तो उस पीसीआर का कोई मतलब नहीं है, राइट? तो आप कोशिश ये करो कि 5 स्ट्राइक ऊपर और 5 स्ट्राइक नीचे। सो मैक्सिमम आप 10 स्ट्राइक ऊपर नीचे तक जाके, और उसका जो ओपन इंटरेस्ट है उसको आप कैलकुलेट करके अगर पीसीआर देखोगे, तो आप मार्केट को सही प्रिडिक्ट कर पाओगे, राइट? सो कोशिश करो कि 5 स्ट्राइक ऊपर 5 स्ट्राइक नीचे का, उसको मैं बोलता हूं रेलेवेंट पीसीआर। मैं नवनीत तुम लोगों के साथ बीच में शेयर भी करता था, यस राइट? सर, यस सर। हाँ, सो लेकिन वो इतना डेटा हो जाता है कि सब क्लाइंट्स को भी लगता है कि यार इतना इंफॉर्मेशन सो मतलब उनको लगता है कि पीएचडी ही ना हो जाए, सो मैंने थोड़ा उसको कम कर दिया। सो आप उसको देखो, मेरे को काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट उसमें मेरे को मतलब रिलेटिवली पता होता है कि यहाँ सुमित ने रिक्वेस्ट किया, उसको दो ना स्पीकर। एक मिनट, मैं बोलता हूँ, उसको बोलता हूँ, ठीक है सुमित? हाँ हाँ सुमित, पूछो सवाल। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा। अरे हाँ बोलो सुमित। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, थैंक यू, हाँ और प्लीज। मैं चाह भी रहा था कि आपका जल्दी ही आपका वो विश पूरा हो कि निफ्टी 18,500 से पहले मैं ट्विटर स्पेस नहीं करूंगा। तो सेकंड कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। और दूसरा जो मेरा क्वेश्चन था ये यही था कि जो पुट कॉल रेशियो हम लोग देखते हैं, तो आपने ये तो क्लियर कर दिया कि आप 5 स्ट्राइक प्राइस रखो, लेकिन उसमें ये भी देखना जरूरी होता है कि नियर नेक्स्ट फार कंबाइंड देखना चाहिए या केवल नियर मंथ का देखना चाहिए? देखो सुमित, क्या है ना कि अभी तुम देखोगे ना, तो सारा जो 90% कॉन्सेंट्रेशन है वो वीकली में है, हाँ जी, राइट? हाँ जी, नियर और फार में तो कॉन्सेंट्रेशन है नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो तो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे ट्विटर पे कुछ एनालिस्ट हैं, वो फार वाले का देख के अगर कोई मूव आ गया तो बोले देखो ये देखकर मैंने बाई कॉल दिया था और चल गया, राइट? जी बिल्कुल। तो उसको मैं अपने एनालिसिस में बोलता हूं कर्व फिटिंग, कि कुछ भी पब्लिक को आप बोलने के लिए बोल के निकल जाते हो, बट रियलिटी है कि 90% पैसा जो है बड़े प्लेयर का, वो करंट में लगा है, मतलब जो जो एक्सपायरी रन हो रही है, राइट? जी जी चाहे वो एफआईआईज हो, चाहे वो निमेश भाई की पोजीशन हो, चाहे वो वल्लभ भाई के डेस्क से पोजीशन हो, या किसी फैमिली ऑफिस की पोजीशन हो, या कोई भी बड़ा ऑप्शन ट्रेडर है उसकी पोजीशन हो, राइट? जी तो वो सारा कंसंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम का गेम करंट में है, तो आप करंट का ही देखो। अगर आपको बहुत, अगर बहुत स्मार्ट हो, आपको समझता है,
तो आप एक मंथली भी थोड़ा रेफरेंस के लिए देख सकते हो। फिर नेक्स्ट वीक का मत देखो, मंथली देखो सीधा, ठीक है ना? ठीक है, तो ठीक है मंथली में बहुत बड़े प्लेयर की पोजीशन होती है, आप समझो। जी। मतलब वो ग्रैंड डैडी की पोजीशन होती है, वो जल्दी से हिलता नहीं है, आपने देखा होगा। अगर बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं, सुमित भी खुद बहुत अच्छे ट्रेडर है, इसलिए मैंने इनका सवाल लिया। ये स्पाइडर करके कंपनी है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की, सो उसमें ये काम करते हैं और ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए मैंने इनका क्वेश्चन लिया, क्योंकि इनका क्वेश्चन मुझे लगा कि डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन होगा। सो सुमित, आप ना देखो तो करेंट वाला देखो और एक मंथली देख लिया करो, ठीक ठीक है? है सर। इससे सफिशियंट है। बैंक निफ्टी में तो करंट वाला ही देखा करो, बैंक निफ्टी में तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है? जी जी। और कुछ सिर्फ पीसीआर से कुछ नहीं होगा, हाँ, आपको वो ना। तो एक एक्स्ट्रा, एक तरह से मतलब थोड़ा एडवांटेज हो जाता है। देखो, और एक ना आप ना एक रेंज डिफाइन करो कि बुल मार्केट में पीसीआर की रेंज क्या होनी चाहिए, साइडवेज मार्केट में पीसीआर की रेंज क्या होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बियर मार्केट है, लेट्स से कि बहुत लोगों को अभी भी ट्विटर पे लगता है ना कि बियर मार्केट है, राइट? वो सो होप वो होप है लोगों का, उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। उस उनका भी एक पीसीआर का रेंज होना चाहिए कि इसके ऊपर जाएगा तो मैं बुलिश या बेयरिश जो भी है, राइट? जी तो ये जी। थोड़ा सा आप रखोगे तो मेरे को लगता है आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, थोड़ा और अच्छा करोगे, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू जी। और कुछ नवनीत? सर लास्ट क्वेश्चन है अबाउट एनटीपीसी, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है? लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, पैसा बनेगा इसमें। ओके। लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा 3-4% का करेक्शन है तो आप लेके रख सकते हो। ओके सर, ये एक टीएस आनंद का क्वेश्चन है, बिटवीन आईओसी एंड बीईएल, considering factors of dividend yield, latest result and long term, which is better to enter? बीईएल एंड आईओसी? Yes sir. राइट नाउ आईओसी, टू बी ऑनेस्ट। Okay sir. Yeah, if you are looking for safety, because at 18,500, my focus is not capital appreciation, my focus is capital preservation. So I am going little defensive. BEL is business wise is going very, very good, and everything is great about this defense story. But the stock has rallied almost 250% in last 2 years, and Yes sir. IOC is down some 20-25% in last 1 year. So at last, maybe 30% even in last 1 year. So I think IOC will be a safe bet from here on, because the Brent crude is coming down, and slowly, after the Gujarat election, the price rationalization will happen, and again these companies will come back, right, for sure. Okay sir. So Dr. Divyanshu Goyal का क्वेश्चन है अबाउट मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप्स का आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड. No, they have already rallied, right? So some of my stocks, I don't want to sound overconfident, but some of our stocks, I think Anand, you messaged me today na, that the most of our stocks at all time high, right, if I'm not wrong? Yes, sir. And what I told you, just hold on. Yes, hold on. So, guys, why you guys are facing this problem that your stocks are not giving you the returns? Because I think you have already paid too much valuation for that company, and despite of good results or good earnings, your shares are not going up. So always do bargain buying, and look towards the valuation first, right? आप valuations को देखो पहले, आपको नहीं समझ में आता है, मेरी भी रिकमेंडेशन है आप उसको छोड़ दीजिए प्लीज। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग इतना वैल्यूएशन पहले ही दिन पे कर देते हैं उस कंपनी को, 50 की पी पे खरीद के बैठ जाते हैं, पेग का रेशियो रहता है 3 टाइम्स 4 टाइम्स पेग पे 50 की पी, तो उस पे आप अगर खरीद के बैठ जाओगे तो फिर थोड़ा पैसा बनाना मुश्किल, मैं ये नहीं करूं वो बनाएगा नहीं, थोड़ा फिर आपको लंबा वेट करना पड़ जाता है, तो वो टाइम करेक्शन में आपका पेशेंस ना थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है, मैं समझ सकता हूं। सो ये जो अभी जो परेशानी ये है कि आप लोग थोड़ा वैल्यूएशन देखना चालू करो प्लीज, कि आप किस पेग पे बाई कर रहे हो, कितने की पी पे बाई कर रहे हो, इसका एनुलाइज्ड ईपीएस ग्रोथ कंपनी का क्या है। अगर मैं बहुत ज्यादा पी पे कर दूंगा अभी, या बहुत ज्यादा पेग रेशियो पे करके खरीद लूंगा इस कंपनी को, और आगे इसकी ग्रोथ थोड़ी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई,
तो ये तो स्टॉक बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने का। ओके सर, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ऑल्दो ये प्रमोशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, पर बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि एफटीडीबी प्रोग्राम जो है कैन बी टेकन बाय कैश ट्रेडर ऑल्सो। नहीं नहीं नहीं, आप लोग प्लीज वो बिल्कुल नहीं ज्वाइन करेंगे। और कुछ क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये मैं कभी भी ट्विटर स्पेस करके कोई प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन नहीं करता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज, कल मैंने गलती से ये लिख दिया था कि जो छोटे कैपिटल वाले ज्वाइन ना करें। सो बहुत लोगों को ऐसा लगा, मतलब कुछ लोगों को, मतलब वो ठीक है मैं समझता हूँ, मेरे हैंडल पे शायद सबसे कम ट्रोलिंग है, और बहुत मतलब ट्रोलिंग है भी नहीं, जीरो के बराबर है। बहुत काफी लोग एडमायर भी करते हैं कि हमने ठीक ठाक काम किया। एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं किसी को छोटा और बड़ा नहीं बोल रहा हूं, प्लीज समझो। अगर आपने मेरे को एक बड़ा फीस दे दिया, जो भी फीस है वो तो पब्लिक डोमेन में है, सेबी मुझे कहती है आप 1 रुपए वाले क्लाइंट भी ले सकते हो, सेबी मुझे अलाउ करती है, ठीक है। सेबी के रेगुलेशंस में मैं बिल्कुल अलाउड हूं कि मैं ले सकता हूं, बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने मान लो 2 लाख रुपए की कैपिटल है, आपने वो एफटीडीबी मॉडल ज्वाइन कर लिया और महीने का आपको 4% का रिटर्न भी आया, तो एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, तो आपको 8,000 रुपीज बने और उसमें से 4500 या 5,000 फीस प्लूटस को चली जाएगी, तो आपकी जेब में 3,000 बचेगा। उसमें आपको टैक्सेस पे करने हैं, उसमें आपको अपने जो भी है, मतलब आपका फोन का खर्चा है, आप ट्रेड कर रहे हो, आपने इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा होगा, आपको बचेगा क्या दोस्त। सो मेरा आपके लिए कंसर्न था, मेरे को, मैं किसी को एरोगेंट से नहीं कि मैं छोटा क्लाइंट नहीं लेता बड़ा क्लाइंट। जब वेबिनार होगा तो आपको सीखना ही है ना। सो ये एफटीडीवी मॉडल सीखने के लिए नहीं है, ये वेबिनार नहीं है, ये सीधा रिसर्च प्रोडक्ट है। आपको जब सीखना होगा, जब मैं वेबिनार करूंगा, हमने 2-3 महीने से किया नहीं है वेबिनार, सो जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो आप ज्वाइन करके सीख लेना। मेरे को किसी को मतलब मेरे को दुख होता है कि लोग थोड़ा से किसी भी मैसेज को थोड़ा गलत समझ लेते हैं। मैं किसी को मतलब बड़ा छोटा मानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि बहुत सारे इस मार्केट में एचएनआईज आए जो रिटेल बन के गए, और बहुत सारे रिटेल आए जो एचएनआई बन के गए। एक टिपिकल एग्जाम्पल है आशीष कचौलिया। जब उन्होंने मार्केट में स्टार्ट किया था तो एज ए रिटेल स्टार्ट किया था। आज आप समझो तो राकेश झुंझुनवाला, मधुसूदन केला, ये सब लोग एक टिपिकल मतलब छोटे छोटे बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। सो किसी सबका वेलकम है यहाँ पे, कोई बड़ा छोटा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आप इतना फी क्यों पे करना चाहते हो मुझे, और क्योंकि आपको कोई इमीडिएट फायदा होगा नहीं, और आपको लर्निंग ही करनी है, तो आप वेबिनार में आना, इसमें आने का कोई मतलब नहीं है। नवनीत, आई होप आई हैव क्लैरिफाइड इट। यस सर, थैंक यू सर। सर हो गया, दैट्स इट। सो गाइज ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा आप लोग वैल्यूएशंस का ध्यान में रख के ही यहाँ पे काम करेंगे, और बहुत ज्यादा ब्लाइंड बुल बनने की जरूरत नहीं है। मार्केट का ऑल टाइम हाई लग गया है, बट हमें एरोगेंट नहीं होना है, हमें किसी को मॉक नहीं करना, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना, हमें किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना, अपना शांति से काम करना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, एंड कोशिश ये करनी है कि अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना है, राइट। और कैसे हम अपनी कैपिटल को लेके ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर पाए, राइट। बिकॉज हमारे और इंस्टीट्यूशन में क्या फर्क होता है कि इंस्टीट्यूशन अपनी एक एक रुपए के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनको लॉस होता है तो वो उसको लिखते हैं कि क्यों लॉस हुआ। अगर आप उसको लिखना चालू कर देंगे कि आपसे क्या गलती हुई है, तो आप डेफिनेटली, मैं बोल रहा हूं, आप बहुत अच्छा लाइफ में कर पाएंगे, राइट। तो ये सब चीजों को आप थोड़ा ध्यान में रखें। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने देखा होगा पीछे क्या ऑप्शन बाइंग को लेके हुआ। कुछ ट्रेनर ये समझते हैं कि मैं यार ऑप्शन बाइंग के खिलाफ हूं। उनको प्लीज ये समझना चाहिए, यार मैं तुम्हारे धंधे के खिलाफ नहीं हूं, तुम्हारा बिजनेस नहीं खराब कर रहा हूं। प्लीज इस चीज को समझो, तुम ना लोगों का घर बर्बाद कर दोगे, और एक्चुअली में तुमको भी नहीं पता है कि तुम लोगों का घर बर्बाद करने में कैपेबल हो, राइट। तो तुम तो सिर्फ अपना बिजनेस करने आए हो, बट तुम्हारे बिजनेस के चक्कर में बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद हो जाएगा, तो वो या उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। प्लीज आप वो काम मत करिए, बिकॉज वो जो ऑप्शन बायर है उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड इस मार्केट में 3-4 साल से ज्यादा का नहीं है। तो उस बेचारे को भी नहीं पता कि वो इतनी बड़ी गलती कर रहा है। मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूं कि वो बदमाश है या वो जानबूझ के कर, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है लोगों के साथ। और आपने ट्विटर पे देखा होगा क्या हुआ, वो ठीक ठाक बच्चे हैं, वो लोग किसी ग्रीड में आके किसी को कैपिटल दिया, कुछ भी उल्टा सीधा किया उसने, 80-80% कैपिटल उड़ गई। ऐसा मतलब क्यों करना है यार।
उसको भी क्या मिला बेचारे ट्रेनर को, इतनी बदनामी बेचारे को उसको भी मिल गई, क्या जरूरत थी उसको ये सब फालतू का काम करने की, वो ऑलरेडी अच्छा कर रहा था। सो ये सब जो ग्रीड है ना, उसको आप लोग भी अपने बिजनेस में थोड़ा कम कीजिए, ग्रीड को थोड़ा कंट्रोल करो। देखते हो मैं कैसे बिजनेस आता है, मैं ना बोल देता हूं, आप बिलीव करोगे, मतलब जहां पे भी मुझे लगता है ना कि बंदा ग्रीडी है, मेरे को वो क्लाइंट चाहिए ही नहीं चाहिए, मेरे को वो बिजनेस चाहिए ही नहीं चाहिए, बिकॉज उसका ग्रीड मुझे हायर रिस्क लेने के लिए फोर्स करेगा, और वो फिर मेरा पूरा मॉडल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो मुझे नहीं करना है। मुझे क्यों जरूरत है, मैं अपना खुद का कैपिटल पूरा डिप्लॉय नहीं कर पाता हूं, जिन लोगों ने मेरे साथ 15 साल से, उनका कैपिटल पूरा डिप्लॉय नहीं कर पाता हूं। मेरे को जरूरत, मतलब किसी को भी आई थिंक अगर कोई थोड़ा ठीक ठाक काम करेगा तो उसको इतना ग्रीड में पड़ने की जरूरत नहीं है। और ट्रस्ट मी, आप भरोसा रखो, आप सब लोगों का, चाहे किसी का पोर्टफोलियो बहुत छोटा है या किसी का बहुत बड़ा है, आप सब लोग बहुत अच्छा करने वाले हो। थोड़ा अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, थोड़ा पढ़ते रहो, कुछ भी सीखते रहो, ठीक है। मैं एक एक डेट टाइम आपको बता देता हूं, क्यों, इसलिए नहीं कि मेरे को कोई कुछ गॉड गिवन है या कुछ नहीं, ये सब स्टडी से हुआ है, पॉसिबल है। 60-65% भी आपका स्ट्राइक रेट है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, बोरोड मनी से मत ट्रेड कीजिए, ऑप्शंस बाइंग करनी है आपको, गैम्बल खेलना है, एडिक्शन है, अपनी कैपिटल का 2-3% से कीजिए, राइट। इंडिया में बहुत कम ऑप्शन ट्रेडर है जो नेट में प्रॉफिटेबल है, ऑप्शन बायर बहुत नेट में कम वाले प्रॉफिटेबल है, तो उनको आप थोड़ा सा अगर वो बड़ा बड़ा क्लेम करे तो थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए। बाकी इंडिया के मार्केट में अभी बहुत पैसा है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, और मेरे तरफ से जो बन पड़ेगा, देखो अच्छे टाइम में मेरी मदद आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, बट जब भी आप पे बुरा टाइम आएगा, आपको लगेगा कि आप तकलीफ में हो, आपको मार्केट की गाइडेंस नहीं मिल रही है, सो मेरा ट्वीट जरूर आएगा, मेरा ट्विटर स्पेस जरूर होगा, राइट। डिफिकल्ट टाइम में मैं हमेशा साथ हूं, अच्छे टाइम में आपको 10-20 दोस्त मिल जाएंगे, बुरे टाइम में मेरा साथ आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, वाइफ की रिस्पेक्ट कीजिए, बच्चों की रिस्पेक्ट कीजिए, थोड़ा बहुत अगर पैसा गलती से बना लिया है इस रैली में तो थोड़ा थोड़ा उनको गिफ्ट कर दीजिए, कुछ पैसे, वाइफ को कुछ पैसे दे दीजिए, माँ को कुछ पैसे दे दीजिए, बुरा टाइम आएगा तो रेनी टाइम में वो पैसे आपको काम आएंगे। यही मेरी आखिरी एडवाइस है। बाकी मैं टच में हूं आप लोगों के, कुछ कोशिश करूंगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्टिलाइजर के स्टॉक्स आपको 2-4 दिन में कुछ कोशिश करूं कि टेलीग्राम या ट्विटर पे अगर अगर मार्केट कैप वगैरह $2 बिलियन से ऊपर है तो मैं जरूर शेयर करूंगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नवनीत, था ऑल डन ना? Yes sir, बाय। thank you sir. थैंक्स Bye bye, नवनीत, good night. थैंक्स आनंद, बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट।